Hi students, I hope that you all are good and fine at your homes. So in today's session we will solve this question number 3, okay, of this exercise 1.3. Now question number 3 is stating students that for any integer a means the value of a has not been specified. ए की वैल्यू कोई भी स्पेसिफिक हमें बताया नहीं गया, हम कुछ भी ले सकते हैं. ओके, 2, 3, 5, 10, 100, 200, 1000, 10,000, एनी नंबर वी कैन कंसिडर. ओके, नाउ सो फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल्स 2. किसी भी वैल्यू ए, किसी भी इंटीजर ए की वैल्यू के लिए -1 इंटू दैट वैल्यू दैट वी कंसिडर्ड विल बी इक्वल टू हाउ मच, वो कितने के बराबर होगा, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इसे, फर्स्ट वी विल कंसिडर एनी रैंडम वैल्यू ऑफ ए एंड देन वी विल सी दैट हाउ मच आर वी गेटिंग. ओके, सो लेट अस कंसिडर. नाउ फर्स्ट वी विल कंसिडर फॉर ए इक्वल्स टू 2. नाउ सपोज पहले मैंने a इक्वल्स टू 2 लिया है. ठीक है, कोई भी एक वैल्यू, क्योंकि a की वैल्यू दी हुई नहीं है, किसी भी वैल्यू की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो कोई भी वैल्यू मीन्स 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, कोई भी वैल्यू मैं ले सकता हूँ अपने तरफ से. और यू कैन ऑल्सो कंसिडर फ्रॉम योर साइड. You can consider here 10, 15, 200, 500, 761, any value. Why I am considering a small value? So that my calculation should be very easy. Because here the question is asking -1 into a कितने के बराबर होगा. ये थोड़ी ना बोल रहा है कि बड़ा वैल्यू लेकर तुम मुझे कैलकुलेशन दिखाओ. तो why will I take the risk of means getting involved in mistakes by considering the bigger amount or bigger values, है ना. सो इट्स ऑल अबाउट योर स्मार्टनेस. सो वी विल स्टार्ट आवर कंसिडरेशन विथ ए स्मॉल वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल. सो हियर वी विल कंसिडर 2. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग -1 into a. सो लेट अस वेरीफाई इट. नाउ आई एम गोइंग टू डू -1 into a. हाउ मच इज आवर a? 2. Now if you will multiply these two numbers students, it is basically multiplication of two integer. Okay, तो हम इस केस में क्या करते हैं, पहले साइन को भूलते हैं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. तो दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिलेगा, फिर हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस विल गिव यू माइनस. ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक और वैल्यू दूसरा लेकर देखते हैं. a इक्वल्स टू, नाउ सपोज फॉर a इक्वल्स टू 3. ठीक है, क्योंकि -1 इंटू a किसके बराबर होता है ये हमें देखना है. तो एक और वैल्यू ले लेंगे तो हमें ईजिली ऑब्जर्व हो जाएगा कि क्या होता है. ठीक है, नाउ व्हाट इज आवर क्वेश्चन, -1 इंटू a. ओके, सो अगेन -1 इंटू a. दिस टाइम आवर a इज नॉट 2 बट इट इज 3. ओके, सो इट विल बी 3. नाउ अगेन इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 1 जा विल गिव यू 3 एंड देन माइनस इंटू प्लस विल गिव यू माइनस. नाउ अब दोनों मल्टीप्लिकेशन करने के बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखते हो, इफ़ यू विल ऑब्जर्व इट माइन्यूटली, देन यू विल फाइंड आवर a was 2 and then in result we are getting -a. Getting or not? What we considered, a is equal to 2. But after the performing the operation according to the question, what we are getting, a equals to -a. Again here a equals to 3 and in result we are getting minus 3. Okay, what it is indicating, it is indicating that whenever for any value of integer a, when you will multiply it by -1, you will get -a always in your result. तो ये बताता है कि ये जो है इक्वल टू हमेशा -a के बराबर होगा. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेगमेंट स्टूडेंट्स, दिस इज योर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज सेकेंड सेगमेंट ऑफ सेम क्वेश्चन नंबर 3. सो इट इज सेइंग दैट डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज 22.
अब इसमें बोल रहा है कि ज्ञात करो, फाइंड करो, ढूंढो उस इंटीजर को जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ कितना होना चाहिए, -22। ठीक है, तो यू विल सी हियर स्टूडेंट्स, सी व्हेन दिस -1 विल बी मल्टीप्लाइड with that integer, then the value should be -22. So it's obviously 22 because see, when 22 is multiplied by -1, okay, then you will only get -22 in the result. So first you have to think that, as I told you in my previous video also students, कोई भी नंबर है, when any number is multiplied by 1, the number itself is result. okay, तो यहाँ पे -1 से यहाँ पे 22 हमें लाना -22, ठीक है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन ऑलरेडी है वहाँ पे, ठीक है, तो 22 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा -22 आएगा ना। हाउ, सी हियर इन रफ आई विल शो यू, -1 इंटू 22, तो ये 22 और ये 1 को हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉरगेटिंग द साइन। ओके, सो 22 1 जा 22। नाउ रिकॉल द साइन, दैट इज प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस, दैट वी हैव टू ऑलरेडी डिटरमाइन इन द रिजल्ट। सो what will be the number? The number will be -22. Now again in the next segment we have to find, or we have to get 37 in the result when it is multiplied by -1. So again here in this case the number will be 37 only, 37 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 22 था तो 22 ही था, सिर्फ माइनस और प्लस का खेल है, माइनस होगा या प्लस होगा, तो ये आप सोच सकते हो, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इन वेरी डिटेल, ठीक है, तो वहाँ से आप समझ सकते हो, जान सकते हो क्या करना है। -1 और यहाँ पे रिजल्ट में 37 है, तो व्हेन -1 विल बी मल्टीप्लाइड टू समथिंग माइनस, सोचने की बात है ना, जब -1 को किसी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो रिजल्ट में हमारा प्लस आएगा ना, और वो नंबर कौन होगा, 37। क्यों होगा 37? क्योंकि रिजल्ट में 37 है। वन थिंग यू ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड स्टूडेंट्स, दैट इन द क्वेश्चन ओनली द सॉल्यूशन, हाफ ऑफ द सॉल्यूशन और कंक्लूजन, और यू कैन से इंडिकेशन टुवर्ड्स योर सॉल्यूशन इज गिवन इनसाइड द क्वेश्चन और इन द क्वेश्चन ओनली, ठीक है। यहाँ से पहले पता करना है वो नंबर कौन होगा, 37 ही होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 37 ही मिलेगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस चाहिए मुझे, तो वहाँ ऑलरेडी -1 है, तो व्हेन दिस -1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -37, देन ओनली वी विल गेट 37 इन द रिजल्ट ना। वाई 37 1 जा 37। नाउ व्हेन यू विल मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस, इट विल गिव यू प्लस, और here that is required. So what will be the number required? -37. Here what we got, 22. Here we had to find -22, so we got to 22 plus 22. Here we had to find plus 37, so we got -37. Or you can say when any number, suppose here it would have been -54, then required number will be 54. Suppose here it would have been 72, then required number will be -72. जस्ट अपोजिट, ठीक है, उल्टा होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेगमेंट, सी सेगमेंट स्टूडेंट्स, दैट इज डिटरमाइन द नंबर और इंटीजर दैट विल बी मल्टीप्लाइड when it is multiplied with -1, then it product should be 0. So it is no other but 0 itself. When -1 multiplied by 0 will give 0, or any number in this world students, when multiplied by 0 its result is always 0. Okay, whenever you have to calculate or you have to manage to get something like 0 in the result, then always you have to multiply with 0, and here we have been already given the operation that we have to multiply. यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो किस नंबर 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 0 आएगा।
So I hope that you understood this question also, students. We'll meet you in the next video. Till then, all of you stay safe. Take care. Bye bye everyone.